Hello everyone. Today's we have the topic diabetes retinopathy. We are discuss about the retinopathy. Its introduction and definition, types, pathophysiology, management, diagnostic evaluation, and treatment. Good. So diabetes retinopathy it is a chronic progressive light-threatening disease of the retinal microvasculature associated with the prolonged hyperglycemia and other conditions linked to diabetes such as hypertension. Okay, so diabetes retinopathy it is a chronic progressive slight threatening disease of the retinal. इसका slight threatening disease of retinal microvasculature associated with prolonged hyperglycemia and other condition linked to the diabetes such as hypertension. ये आपका अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से हो सकती है, अनकंट्रोल आपका हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, हाइपर प्रोलॉन्ग क्रॉनिक हाइपरग्लिसमिया की वजह से एंड हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। इसमें क्या होता है आपका दिस इज द क्रॉनिक प्रोग्रेसिव स्लाइड थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं जिसमें आपका जो विजन है वो आपका ब्लर विजन होता है बिकॉज ऑफ रेटिनल आपका माइक्रोवेस्कुलेचर का इसमें एसोसिएटेड होता है डिसीज। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से आपको कॉज हो सकती है। इसका प्रिवलेंस रेट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद द डायबिटीज इज प्रोजेक्टेड टू रेज फ्रॉम। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पीपल डायबिटीज में जो केस देखने को मिले हैं जो कि हमारे 285 मिलियन इन 2010 से लेकर के 439 मिलियन इन 2030 में देखने को मिले। ऑलराइट, सो इन केस इन फ्यूचर में 2013 का ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि 439 मिलियन तक इनके केस हो सकते हैं। अब diabetes remain a leading cause to legal blindness between the age 25 to 65 ईयर इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। अब डायबिटीज जो रिमेन्स लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज है, दिस इज द लीगल ब्लाइंडनेस बिटवीन द एज 25 to 65 ईयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, सो डायबिटीज रिमेन अ लीडिंग कॉज, इट इज अ लीडिंग कॉज लीगल ब्लाइंडनेस होना बिटवीन द एज केसेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है 25 से लेकर 65 ईयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.8 मिलियन ऑफ 1.8 millions of the 37 million causes of blindness throughout the world। ओवरऑल वर्ल्ड में इसके 1.8 मिलियन कॉजेस हमको देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 37 मिलियन कॉजेस में से। थ्रू आउट द वर्ल्ड 4.9% 33% ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज हैव अ साइन ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। 33% पेशेंट में, और डायबिटीज का जो हायर प्रिवलेंस रेट है वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है जिसमें से 100 में से 33% जो होते हैं आपके डायबिटीज का जो पेशेंट विद डायबिटीज हैव अ साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का साइन यूजुअली देखने को मिल जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज इट्स बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द डायबिटीज रेटिनोपैथी। अब ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो है डायबिटीज कितने समय से है, कितने प्रोलॉन्ग टाइम से है। तो इनकेस प्रोलॉन्ग टाइम में क्रॉनिक में ज़्यादातर देखने को मिलता है। In patient diagnosed with DM before the age of 13, the incidence of DR after 10 year is 50% and after 30 year is 90%। अब इसमें कोई ऐसा पेशेंट है जिसको यूजुअली डायग्नोस होता है आपका एज ऑफ 30 में या बिफोर 30 के आसपास आपको डायग्नोस हुआ है आपको डायबिटीज। तो इनकेस जैसे एज इंक्रीज होती है आफ्टर दी 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर मतलब कि 40 के एज में ये 50% चांस होते हैं इसके इंक्रीज होने के। आफ्टर 30 ईयर में आपका 90% यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आफ्टर 30 ईयर में 90% केसेस हो जाता है। तो इसका जो प्रिवलेंस है, इसका जो मीन्स थ्रेटनिंग है वो इंक्रीज होते जाता है। आफ्टर 20 ईयर ऑफ डायबिटीज नियरली 99% पेशेंट विथ first type 1 diabetes, 60% with the type 2 diabetes। okay, so after 20 year of diabetes, जैसे 20 year chronic diabetes होती है तो नियरली 99% इसमें जो केसेस होते हैं पेशेंट के, इनकेस टाइप 1 डायबिटीज है तो इसमें 60% होता है। इनकेस टाइप 2 डायबिटीज है तो इसकी जो मीन्स टाइप 2 हैव मोर एंड हैव सम डिग्री ऑफ द डायबिटीज रेटिनोपैथी, मतलब कि 99% में होता है आपका
टाइप 1 में और 60% होता है दिस इज द टाइप 2 डायबिटीज में of diabetic retinopathy. This is because PDR is a result of the very high average blood glucose level that the more likely to be DM type 1 than type 2. ओके तो अब इसमें किस वजह से होता है दिस इज द रिजल्ट बिकॉज पीडीआर जो रेट होता है इट इज रिजल्ट ऑफ वेरी हाई इट इज वेरी हाई इसका जो रिजल्ट है वो होता है रिजल्ट ऑफ वेरी हाई रिजल्ट देखने को मिल जाता है बिकॉज वेरी एवरेज ब्लड ग्लूकोज अब जो ग्लूकोज का जो है एवरेज से हाई होना वेरी हाई होना एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल that are the more likely in diabetes type 1 than type 2 right so but for for some understanding reason the incidence of maculopathy is more in DM type 2 than type 1 but for some understanding of reason देखा जाए so the incidence of जो rate होता है the incidence of maculopathy का in more होता है diabetes type 2 में देन टाइप 1 में डायबिटीज रेटिनोपैथी रियरली डेवलप विद इन 5 ईयर अब जो डायबिटीज रेटिनोपैथी रियरली डेवलप होती विद इन 5 ईयर ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज और बिफोर प्यूबर्टी but about 5% of type 2 diabetes have DRR presentation okay so DR is rarely developed within 5 years it is the rarely developed होती within 5 years but onset of diabetes और before puberty usually जो onset of diabetes होता है it is before puberty को आपको होता है and what about 5% of diabetes type second diabetics have DR8 presentation would it अब वो जो एग्जामिन है यूजुअली वो हमको कब करना चाहिए इनकेस टाइप 1 डायबिटीज है तो रिकमेंडेड टाइम फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन 3 to 5 ईयर ऑफ आफ्टर डायग्नोसिस आपको कराना चाहिए एंड फॉलो अप होना चाहिए आपका ईयरली टाइप 2 इनकेस आपको डायबिटीज है तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जब आपको टाइम डायग्नोस होता है तब उसके बाद ईयरली एंड प्रायोर प्रेगनेंसी टाइप 1 एंड टाइप 2 में प्रायोर टू कंसेप्शन एंड अर्ली इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कराना चाहिए एंड रिकमेंडेशन नो रेटिनोपैथी माइल्ड मॉडरेट अकॉर्डिंग टू 3 to 12 मंथ हो सकता है सीवियर में है तो आपका 1 to 3 मंथ में हो सकता है गुड इट एंड अब अनदर रीजन क्या हो सकता है यहाँ पर पुअर आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना एंड द सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया इज द की अल्टरेटिव रिस्क फॉर एसोसिएटेड risk factor associated with the development of the diabetic retinopathy okay so क्या इसका पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल का क्या इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया होना इस द की अल्टरेबल रिस्क फैक्टर हो सकता है एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल particularly when institute early can prevent or delay the developmental of progression of DR okay तो दिस इज द सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया डिपेंड करता है इट इज द की अल्टरनेटिव आपका हो सकता है रिस्क फैक्टर आपके एसोसिएटेड हो सकते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल की वजह से हो सकता है टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल पार्टिकुलरली व्हेन इंस्टीट्यूट अर्ली कैन प्रिवेंट and delay the developmental of the progression as per the diabetes control and complication trial intensive control reduce the risk developing retinopathy by 76% and slow progression of the retinopathy 54%. The UK prospective diabetes study conducted similar result in diabetes second patient 25% reduction in risk and however a sudden improvement in control may be associated with progression of retinopathy in near term due to increase in serum and IGF level and type 1 diabetes patient appear to obtain greater benefit from the blood from good control than those with the type 2 raise HbA1c is associated with increased risk of the
proliferative disease. This is because of increased oxygen binding capacity of HbA1c leading to hypoxia. Target HbA1c level, right? प्रेगनेंसी में क्या होती है, प्रेगनेंसी में समटाइम एसोसिएटेड विथ रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। की फैक्टर इसके इंक्लूड हो सकते हैं ग्रेटर प्री प्रेगनेंसी सीवियरिटी ऑफ रेटिनोपैथी, पुअर प्री प्रेगनेंसी कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल एक्सर्टेड too rapidly during the early stage of pregnancy, development of pre-eclampsia and fluid imbalance की वजह से आपको हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से आपको हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन द डायबिटीज एपीसीडी ट्रायल, टारगेट बीपी शुड बी 140/80 होना चाहिए, लेस देन 140/80, and diet control appear to be particularly beneficial in type 2 diabetes with maculopathy. The EuroDF control trial of lisinopril in insulin-dependent diabetes so lower rate of developmental of the retinopathy in diabetes taking lisinopril for antihypertensive medication as compared to placebo. Right? देन नेफ्रोपैथी की वजह से हो सकती है नेफ्रोपैथी इफ सीवियर इज एसोसिएटेड विद वर्सनिंग ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। कन्वर्सली ट्रीटमेंट ऑफ renal disease, AC inhibitor and angiotensin second receptor antagonist may be associated with improvement of retinopathy. अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं आपका स्मोकिंग हो गया, सेक्स हो गया, आपका हाइपर लिपिडेमिया हो गया, कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, ओबिसिटी है, एनीमिया है, एंड कैरोटिड आर्टरी कन्वल्सिव डिसीज एंड अल्कोहल इसकी वजह से हो सकती है। हाई मायोपिया, choroidal degeneration and extensive old cryoretinopathy protect against TR, believed to act in the same manner as retinal photocoagulation by the reducing the metabolic need of retina. पैथोजेनेसिस की वजह से हो सकता है, it is a microangiopathy caused by a effect of hyperglycemia on a small blood vessels leading to retinal capillary occlusion. Retinal capillary leakage की वजह से हो सकती है. This is the reason pathophysiology. Cellular damage, next is cellular को further damage करता है, caused by sorbitol accumulation होना ग्लूकोज में. This is aldose reductase की वजह से होता है. दिस इज दी सोर्बिटॉल. फ्री रेटिकल मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है. एक्यूमुलेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एजीएस की वजह से हो सकता है. एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी एंड डाइसाइक्लोरोल की वजह से आपको हो सकता है. डाइग्लिसरॉल. नेक्स्ट है कैपिलारोपैथी. कैपिलारोपैथी characterized by death of parasite, thickening of capillary basement membranes, orbital pathways, loss of vascular smooth muscle cells, capillary oscularity, endothelial proliferation, abnormalities of RBCs leading to defective oxygen transport and WBCs, increased platelet thickness and additions, increased plasma viscosity, and defective fibrinolysis and prolonged clot lysis time. Breakdown of blood retinal barrier. Blood retinal barrier is composed of two parts: inner RBB, tight junction of retinal capillaries, endothelial cells; outer RBB, tight junction, complex zonula, occlusions and zonular adherence located between the adjacent RPE cells. Breakdown of the RBC lead to leakage lipoprotein responsible for the formation of exudates.
नेक्स्ट नियोवैस्कुलराइजेशन की वजह से कॉज बाय कैपिलरी नॉन परफ्यूजन लीडिंग टू रेटिनल हाइपोक्सिया. न्यू vessels growth is thought to be caused by an imbalance between angio angiogenic anti-angiogenic factor is an attempt to revascularize hypoxia retina. This is the reason. And नॉन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक्स रेटिनोपैथी है. यहाँ पर कुछ इसका कैटेगरीज एंड मैनेजमेंट है. वेरी माइल्ड है तो रिव्यू मोस्ट पेशेंट इन 12th मंथ. नो डी आर है तो रिव्यू इन 12 मंथ. वेरी माइल्ड है. माइक्रो न्यूरिज्म में ओनली तो रिव्यू मोस्ट पेशेंट इन 12 मंथ. माइल्ड है तो एनी और ऑल ऑफ माइक्रो न्यूरिज्म रेटिनल हिमरेज एक्सुडेट कॉटन वूल स्पॉट. तो रिव्यू रेंज 6 to 12 month depending on the severity of sign, stability, systemic factor and patient personal circumstance. Moderate है तो severe retinal hemorrhage 1 to 3 quadrant of mild IRMA. Significant various leading in more than one quadrant. Okay, so review in approximately 6 months. PDR is up to 60% of risk and severe case है तो review in the 4 month. Okay, and very severe है तो review 2 to 3 month. अब कुछ अदर डिक्रीवेटिव कैटेगरीज यहाँ पे आपके हो सकते हैं, जैसे द बैकग्राउंड डायबिटीज रेटिनोपैथी बीडीआर. BDR, it is the earliest phase of DR characterized by micro neurism, dot and blot hemorrhage and excluded diabetes. Maculopathy refer to the presence of any retinopathy at the macula. And pre-proliferative diabetes retinopathy PPDR and cotton wool spot venous change IRMA and deep retinal hemorrhage diabetes papillopathy. It is a form of optic neuropathy seen in the young type diabetes. It is unrelated to the glycemic control or any other known as feature of diabetes. Various classification systems, grading of NPDR according to International American Academy of Ophthalmologists AOA classification, mild, moderate and severe. National Screening Committee United Kingdom NSC UK classification, background level R1, pre-proliferative level R2. Correct. Now symptom. So symptom is the blurred vision, floaters and flashes, fluctuating vision, distorted vision, dark areas in the vision, poor night vision, impaired color vision and partial or total loss of vision. So these are the sign and symptom. ये sign and symptom आपको देखने को मिलते हैं. And like that, normal vision and vision with diabetic retinopathy. अब अनदर साइन क्या हो सकता है, माइक्रो एन्यूरिज्म हो सकता है. इसमें आपका फोकल सेक्युलर डायबिटीज ऑफ द कैपिलरी वॉल, साइज है इसका 200 म्यूएम एंड ऑप्थेल्मोस्कोपिकली विजिबल बेटर ऑन द रेड फ्री illumination if larger than 30 म्यूएम. Smaller one can be visualized on angiography and like that. यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे एरो के पास. and maximally seen in the superior temporal quadrant. causes इसका हो सकता है focal dilation of the capillary wall, their
capillary wall where parasite are absent, or by fusion of two arm of capillary loop, and hyperfluorescent on fluorescein angiography. रेटिनल hemorrhages हो सकते हैं. This may be small and round dot and blot or flame shape depending on their depth within the retinal layers. Retinal hemorrhage spread along the line of least residence, constrained by the local anatomy of the particular layer from which it arises. Therefore, a superficial bleed will track parallel to the nerve fiber layer, resulting in the longitudinal spread becoming फ्लैम. इस तरीके से जो longitudinal spread था ये becoming थोड़ा सा फ्लैम, और ये spread हो जाता है फ्लैम से में आपको देखने को मिलता है. However, deeper in the retina, since the layer are vertically oriented, in the result in circumference around hemorrhage dot and blot देखने को मिलता है. In case एक्सूडेट में हुआ है तो द टर्म हार्ड एक्सूडेट आर दी कॉज बाय क्रॉनिक लोकलाइज रेटिनल अडीमा की वजह से हो सकता है, एंड डेवलप एट द जंक्शन ऑफ द नॉर्मल एंड edematous retina composed of lipoprotein and lipid filled macrophages and are exuded from the micro aneurysm located mainly within the outer flexiform layer and hypofluorescent FA. Hold it. Diabetic macular edema. Diabetes macular is the most common cause of visual impairment in the diabetes patient, particularly type 2. According to the Wisconsin epidemiological study of the diabetics retinopathy, the prevalence rate of macular edema is 10% in the diabetes population as a whole. Edema due to capillary leakage, and the fluid is initially located between the outer plexiform and the inner nucleus layer. Later, it may also involve in the inner plexation and nerve fiber layer. With further accumulation of fluid, the fovea assume a cystoid appearance in the cystoid macular edema seen hyperfluorescent on FA, best detected by the slit lamp biomicroscopy and stereoscopic fundus photography. Would it? Diabetes macular edema prevalence rate mild non-proliferative 33%, not 33%, moderate to severe non-proliferative 38%, and proliferative diabetic retinopathy is cause 71%. Focal diabetes maculopathy and okay, so focal circumscribed retinal thickening सर्सिनेट हार्ड एक्सुडेट इसमें फॉर्म होता है. फोकल हाइपर फ्लूरोसेंस में आपका ऑन एफ है. फोकल फोटो एग्युलेशन एंड गुड प्रोग्नोसिस इट में भी पॉसिबल हो जाती है. एंड डिफ्यूज एंड डायबिटीज मैक्यूलोपैथी में आपका डिफ्यूज रेटिनल थिकनिंग का आपका डिफ्यूज होना, फ्रीक्वेंट सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा का आपका फॉर्मेशन होना, जनरलाइज हाइपर फ्लूरोसेंस ऑन एफ होना, ग्रिड फोटोकोगुलेशन होना, एंड गार्डेड प्रोग्नोसिस आपको देखने को मिल जाना. इस्चेमिक डायबिटीज मैक्यूलोपैथी में आपका ऑक्यूर एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन परफ्यूजन ऑफ पैराफोबियल capillaries with or without interaction fluid accumulation. Macula appear relatively normal. Macula is relatively appear normal. Poor visual acuity, capillary non-perfusion on FS.
focal diffusion and ischemic mixed diabetes maculopathy. This is the combination of three, mix up of three. Clinically significant macular edema and retinal thickening. Then cotton wool spot described by the MC Leod in 1975. The term soft exudate is misnomer because cotton wool spot are not exudate at all, but an accumulation of the intracellular fluid and the organism as a result of local ischemia result from the interpretation of exoplasmic flow in the nerve fiber layer, thereby causing a gross localized axon distension known as cytoid bodies and hypofluorescent on Fa. Once the cotton wool spot resolve the nerve fiber and ganglion cells at that spot atrophy given rise to depression sign. Other causes of cotton wool spot: hypertension, retinal vein occlusion, and retinal vasculitis, anemia, leukemia. Venous changes में क्या होता है? Generalized dilation and tortuosity, loosening, weeding, and sucing like segmentation. आर्टेरियल चेंज में क्या देखने को मिलता है आपको? रेटिनल आर्टेरियोलर डायलेशन, अर्ली मार्कर ऑफ इस्चेमिया, पेरिफेरल नैरोइंग, सिल्वर वायरिंग एंड ऑफ्लिटरेशन. दिस इज proliferative retinopathy, new vessels at the disc and new vessels elsewhere. Okay, like that. This is the microscopic structure of retina. New vessels on the iris पे आपकी new vessels का present होना, also known as rubeosis iridis, high likelihood of progression to the neovascular glaucoma. रेटिनल डिटैचमेंट होना आपका रेटिना का, स्केयर टिश्यू फ्रॉम द न्यूवैस्कुलराइजेशन, श्रिंक लीडिंग टू लैक्रिमल आरडी. विट्रस हेमरेज का आपका होना caused by the bleeding from new vessels. When small, it's perceived as floaters. A very large hemorrhage might block out all vision. Vitreous hemorrhage alone does not cause permanent vision loss. When the blood clear, vision may return to its former level unless the macula has been damaged. Peripheral membrane, retinal membrane, also known as the macular pucer, premacular fibrosis, surface wrinkling, retinopathy, or cellophane maculopathy develop as the result of proliferation of cells between the vitreous and the macula. Now we have the diagnostic test. In diagnostic test, fluorescence angiography, it is identify macular capillary non-perfusion, identify subtle areas of NB causing recurrent vitreous hemorrhage, like that. Color fundus photography for documentation purpose, modify ear lie classification, uses 7 standard photographic field to detect neovascularization. Ultrasonography when opaque media preclude retinal examination, useful in the ruling out. Then retinal detachment, traction, threatening macular detachment, and vitreous hemorrhage, all are there. And ocular coherence tomography, it is also the diagnostic test.
कलर विजन असेसमेंट, एक्यूरेट ब्लू येलो डिफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए कलर में डिफेक्ट्स तो नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स, डायबिटीज रेटिनोपैथी स्टडीज एंड अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटीज। आपका मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विजुअल एक्यूटी लेस देन 20/40, 6 to 12 ईयर, एंड इफ रिडक्शन इज कॉज्ड बाय मैक्यूलर एडिमा, माइल्ड रिस्क आपका मेजर डिजाइन फीचर्स। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर लाइक आपका ग्लिकमिक कंट्रोल, इंसुलिन और जीएच, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, सपोर्ट रेटिनल फंक्शन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल सेसेशन, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, etc. Laser photo-occultation, this is also a treatment in which we have a laser and we produce on the eyes, इसको डायरेक्टली हम फोकस करते हैं आईज के ऊपर, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आर्गन्स लेजर टेस्ट होता है इस तरीके से। So I hope you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this, and we have next chapter, retinal detachment. Okay, so thank you, bye bye.